Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution, Linsbergia Preschool online classes. Today's date is 9 July 2020. Day is Thursday. Hey kids, welcome to your class. And as you all know that we start our day and our class with recitation. So kids, today we will recite an English rhyme. For that, you have to open rhyme book and open the page number 6, early to bed. So kids, stand up in your place wherever you are. Now I am going to recite this rhyme and you have to repeat after me with action. So let's start kids. Early to bed. Repeat after me. Early to bed. Early to rise. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Makes a man healthy, wealthy and wise. Kids, let's repeat one more time. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Kids, I hope you all have enjoyed this rhyme. So kids, just repeat it many times so that you can learn it well. Thank you. Hey kids, let's start our English oral class. As you all know, we have already learned what comes after exercise related to alphabet A to Z. Today we will revise it one more time. So kids, let's start. What comes after A? B. What comes after A, kids? It's B. Then what comes after B? C. A, B, C. What comes after C for cat? It's D for dog. Now A, B, C, D, and what comes after D for dog? It's E. E for egg. A, B, C, D, E. Now what comes after E says egg? F says fish. E says egg. F says fish. What comes after F says fish? G. G says grapes. Now what comes after G says grapes? It's H for hat. H for hat. A, B, C, D, E, F, G, H. F says horse. I says ice cream. Now what comes after I says ice cream? It's J. J for joker. J for joker. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Now what comes after J says K. K says kite. Now what comes after K says kite? It's L. L says lion. J, K, L. L says lion. Now L says lion. M says monkey. Now what comes after M says monkey? It's N. N says net. N says net. Now O. K, L, M, N, O. O says owl. O says owl. Now O says owl. And what comes after O says owl? A P. P says pin. K, L, M, N, O, P. What comes after P says pin? Q. Q says queen. Now what comes after Q says queen? R. R says rabbit. P, Q, R. R says rabbit. S says sun. S says sun. Now what comes after S says sun? It's T. T says tiger. T says tiger. T says tiger. U says umbrella. Now what comes after U says umbrella? It's V. V says van. U says umbrella. V says van. Now W. W says watch. W says watch. U, V, W. Now what comes after W says watch? It's X. X says
Xmas tree. U V W X. X says Xmas tree. It's Y. Y says yak. And at last Z. Kids, what comes after Y says yak? Z. Z says zebra. Let's revise one more time. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. A says apple, and what comes after A says apple? B. B says ball. C says cat. What comes after C says cat? D says dog. What comes after D says dog? E. E says egg. Now what comes after E says egg? F. F says fish. G says grapes. H says horse. I says ice cream. F G H I. What comes after I says ice cream? It's J. J says jug. K. K says kite. L says lion. M says monkey. N says net. And O says owl. Now what comes after O says owl? It's P. P says pin. Now P says pin. Q says queen. R says rabbit. S says sun. Now what comes after S says sun? It's T. T says tiger. T Q R S T. Now U. T U. U says umbrella. And what comes after U says umbrella? It's V. V says when. V says when. W says watch. And what comes after W says watch, kids? X. X says Xmas tree. Now X says Xmas tree. Y says yak. And what comes after Y says yak, kids? Z. Z says zebra. U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kids, learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to your class, and that is English written. Kids, first of all, open your notebook where I have done the setting of 9 July 2020. Day is Thursday. Kids, in our last class, we have learned to draw. This is duck. Today, we will revise again. So kids, read this statement carefully. One man, big fat stomach, make D. One man, big fat stomach, make D. So kids, let us learn to draw. This is duck. One man, big fat stomach, make D. Again, one man, big fat stomach, make D. One man, big fat stomach, make D. Kids, it is very easy to draw. One man, big fat stomach, make D. 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 Kids, D says duck, or D says drum, D says dog, D says doll. So D says duck. Kids, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So let's start one Hindi rhyme. Kids, open your rhyme book, page number
30 इतवार। आज हम कौन सी पोएम पढ़ेंगे किड्स? आज हम पढ़ेंगे इतवार वाली पोएम। सो किड्स, stand up in your place wherever you are and I'm going to recite this poem and you have to repeat after me with actions. So start kids. आज इतवार है, kids repeat after me. आज इतवार है, चूहे की बारात है। रिपीट आफ्टर मी। आज इतवार है, चूहे की बारात है, शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे। किड्स रिपीट वन मोर टाइम। आज इतवार है, चूहे की बारात है, शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे। Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Practice it well and learn it more time. Thank you. Hey kids, let's start our Hindi oral class. Kids, yesterday we have learned स्वर आ से आह एक्सरसाइज और कल हमने इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ी थी चित्र पहचानने की। आज हम उसी को रिवाइज करेंगे। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट। चित्र पहचानेंगे। ये कौन सा चित्र है बच्चों? आ से अनार। व्हाट इज दिस किड्स? आ से अनार। आपको चित्र अच्छे से याद रखना है। ये कौन सा चित्र है? आ से अनार। व्हाट इज दिस किड्स? बड़े आ से आम। ये कौन सा चित्र है बच्चों? बड़े आ से आम। छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली। एंड व्हाट इज दिस? बड़ी ई से ईख। व्हाट इज दिस किड्स? बड़ी से ईख। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है बच्चों? छोटा ऊ। छोटे ऊ से उल्लू। ये तो उल्लू है ना? छोटे ऊ से उल्लू। एंड नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है बच्चों? बड़े ऊ से ऊन। व्हाट इज दिस? बड़े ऊ से ऊन। छोटे आ से अनार। बड़े आ से आम। छोटी से इमली। बड़ी से ईख। छोटे ऊ से उल्लू। बड़े ऊ से ऊन। अब ये किस चीज का चित्र है बच्चों? ये कौन सा चित्र है? री से ऋषि। ये कौन है? री से ऋषि बाबा है। री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी। ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ए से एड़ी। इस चित्र में क्या बना है? ए से एड़ी। री से ऋषि, ए से एड़ी। छोटे आ से अनार। बड़े आ से आम। छोटी ई से इमली। बड़ी से ईख। छोटे ऊ से उल्लू। बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी। अब ये क्या चित्र है बच्चों? ये कौन सा चित्र है? ऐसे ऐनक। हम इस चित्र के साथ इस अक्षर को भी पहचान रहे हैं। ये क्या है? ऐसे ऐनक। व्हाट इज दिस किड्स? ये किस चीज का चित्र है? ओ से ओखली। ये क्या है बच्चों? ओ से ओखली। री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। अब ये क्या है बच्चों? औ से औरत। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? औ से औरत। औ से औरत। नाउ नेक्स्ट, अंग से अंगूर। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? अंग से अंगूर है। अंग से अंगूर। और आह अक्षर तो खाली होता है। आह माने तो कुछ नहीं होता, तो आह अक्षर खाली। इसमें हमने कोई चित्र नहीं बनाया। आह अक्षर खाली। री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। आह अक्षर खाली। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स। एक बार आइए फिर से दोहराएं। आ से अनार। बड़े आ से आम। छोटी ई से इमली। बड़ी से ईख। छोटे ऊ से उल्लू। बड़ी ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से
औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, और आहा अक्षर खाली, आहा अक्षर खाली. Kids, learn it many times so that you can learn it well. Hey kids, welcome to next class, and that is Hindi written. Kids, take out your in the Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 9 July 2020 and day is Thursday. Kids, yesterday we have learned to draw the formation of बड़ा आ. बड़े आ से आम. कल हमने क्या बनाया था? बड़े आ से आम बनाना सीखा था. तो आज हम क्या करेंगे? उसी को रिवाइज करेंगे. मीन्स के उसी को दोहराएंगे. So kids, read this statement carefully and after that हम अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. So let's start. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. बढ़िया से आम. इस स्टेटमेंट के साथ हमने क्या बना दिया? बढ़िया से आम बना दिया. Repeat it one more time. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. बढ़िया से आम. So kids, let's revise. बढ़िया से आम. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. Kids, हमने आपको कल बताया था कि हम कर्ली वर्ली ट्री बनाने के बाद जो वन मैन बनाएंगे हलो हलो सिर्फ उससे ही कराएंगे. जो टू मैन होगा उससे हलो हलो नहीं कराएंगे. और हेड बनाने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि हेड सिर्फ वन और टू मैन पर ही बनेगी. कर्ली वर्ली ट्री पर हम हेड नहीं बनाएंगे. ओके. कर्ली वर्ली ट्री, वन मैन, टू मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट. कर्ली वर्ली ट्री, वन मैन, टू मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट. कर्ली वर्ली ट्री, one man, two men, hello hello, make a hat. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. Curly Wurly tree, one man, two men, hello hello, make a hat. Kids, हमने क्या बनाया? बढ़िया से आम बनाया और बढ़िया से आम को आज हमने रिवाइज भी कर लिया. ओके. Now I have done my work. Now it's your turn. Thank you. Hey kids, welcome to your next class, and that is maths written and oral. Kids, open your notebook where I have done the setting of 9 July 2020. Day is Thursday. Kids, yesterday we have learned to draw the formation of 4. Today we will revise the same thing. Okay, so let's start, kids. Firstly, we have to read this statement. One man, hand out, cut, policeman, 4. Repeat it again. One man, hand out, cut, policeman, 4. So kids, let's revise. One man, hand out, cut, policeman, 4. 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 Again, one man, hand out, cut, policeman, 4. One man, hand out, cut, policeman, 4. One man, hand out, cut, policeman, 4. Kids, count these objects. How many flowers are there? There are 4 flowers. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Kids, how many fingers are there? There are 4 fingers.
Count them. 1, 2, 3 and 4. Repeat it again. 1, 2, 3 and 4. So kids, practice it well. Thank you. Hey kids, let's start our maths oral class. Yesterday we have learned counting 1 to 20. So today we will learn counting 1 to 30. Kids, let's start. Start a video please. Okay, fold your hand. Very good. So let's start kids. 1. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10. 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. 1, 4, 14. 1, 5, 15. 1, 6, 16. 1, 7, 17. 1, 8, 18. 1, 9, 19. 2, 0, 20. 2, 1, 21. 2, 2, 22. 2, 3, 23. 2, 4, 24. 2, 5, 25. 2, 6, 26. 2, 7, 27. 2, 8, 28. 2, 9, 29. 3, 0, 30. Kids, repeat it many times so that you can learn it well. You have to learn on counting 1 to 30. Thank you. Hey kids, welcome to your next class and that is GK Oral and Conversation. Kids, in our last class we have learned only 5 animals. Okay? So today we will learn some more animals. So let's start kids. Today we will learn 5 more animals. Start kids. Cow, goat, sheep, horse, lion. Revise it one more time. Cow, goat, sheep, horse, lion. And other 5. Camel, donkey, giraffe, elephant, kangaroo. Camel, donkey, giraffe, elephant, kangaroo. Kids, count on your fingers. Camel, donkey, giraffe, elephant, kangaroo. Repeat it one more time. Camel, donkey, giraffe, elephant, kangaroo. Kids, let us learn all 10 animals. Cow, goat, sheep, horse, lion. Camel, donkey, giraffe, elephant, kangaroo. Repeat it one more time. Cow, goat, sheep, horse, lion. Camel, donkey, giraffe, elephant, kangaroo. Now count on your finger. Cow, goat, sheep, horse, lion. And other 5. Camel, donkey, giraffe, elephant, lion. Kids, you have to learn all 10 animals. Okay? Learn it well. Thank you.